Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be talking about 28th of June current affairs. Here we will be talking about Sarbandana Sonowal has inaugurated India's first maritime NBFC, that is Sagarmala Finance Corporation Limited. Then we will be talking about 10 years of Amrit scheme. We will be discussing it. Then NHAI, that is National Highways Authority of India, has developed the India's first wildlife corridor on Delhi-Mumbai Expressway in Rajasthan. Then Ministry of Housing and Urban Affairs has launched SABB campaign under Swachh Bharat mission. Then Kerala's Arlam Wildlife Sanctuary became India's first butterfly sanctuary. All these news and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily video at 5 a.m. in the morning for your revision and for your preparation for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. Sarbandana Sonowal has inaugurated the India's first maritime NBFC, that is NBFC is your non-banking finance company in the maritime sector. Right, this is important. I repeat, India's first maritime sector NBFC, that is Sagarmala Finance Corporation Limited. Take a note of this. Remember this Sagarmala Finance Corporation Limited, right? This is now positioned to play a transformative role in India's maritime infrastructure development that is in line with the Amritkal vision of India's, that is Viksit Bharat 2047. This is a Mini Ratna Category 1 CPSC that has been formally registered as NBFC with RBI. The purpose of the sector-specific NBFC is to bridge the financing gap in the maritime sector and to provide the financing to the sector whenever required, to the MSMEs, so that they can grow. Right? Take a note of it. Next, here you can see, apart from this, digital center of excellence, right? It is Ministry of Port Shipping and Waterways and Center for Development of Advanced Computing. They sign an MOU to establish a digital center of excellence for the maritime sector. This remember also. Then next, remember Sagar Setu platform. It is Ministry of Port Shipping and Waterways that has launched this Sagar Setu platform to boost the operational efficiency, improve productivity, and simplify the ease of doing business in the maritime sector. Right, so these are the some key initiative that has been launched. Then one more, remember, Drishti framework. Right, this Drishti is your data driven decision support review institutional information system for hastening and tracking implementation. Right, this has been launched as a comprehensive monitoring tool. It is a monitoring tool to fast track the maritime goals and ensure the timely implementation of Maritime India Vision 2030. Next, so these are Drishti, Sagar Setu and Digital Center of Excellence launched, and apart from this, there's Sagarmala Finance Corporation. This is an NBA registered as NBFC with RBI. Moving on. Next, we are talking about 10 years of Amrit, right? What is Amrit? Amrit is your Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, right? So this initiative was launched on 25th of June in 2015 by Prime Minister Narendra Modi, and if the implementing ministry is being asked, so it is Ministry of Housing and Urban Affairs that has launched this mission to improve the quality of life living in the people living in the urban areas, right? Such as your better water supply, sewage, water, urban transport, powers are there, and so on. If we talk about this Amrit scheme, and it has completed 10 years in 2025 now, Amrit mission has covered 500 selected cities and towns. Right, here you can see 500 selected cities and towns. Then key components of the Amrit mission here is capacity building, reform implementation, water supply, sewerage, septic management, storm water drainage, urban transport, and so on.
If we talk about this Amrit, here you can see the full form, right? This is a central sponsored scheme with funds shared among the states and union territory based on urban population and number of towns. This has covered 500 selected cities across India. Next is National Highways Authority of India, right? They have developed the India's first dedicated wildlife corridor on national highway. This is a 12-kilometer stretch of the Delhi-Mumbai expressway passing through the buffer zone of Ranthambore Tiger Reserve in Bundi district of Rajasthan, right? So what is this? This is a wildlife corridor. Say for example, this is the highway, and below this you will be seeing a corridor through which at both these locations are basically agriculture land, or you can say this is the forest, that is your Ranthambore Tiger Reserve, and the animals, wildlife will be able to cross through the highway below this highway, right? This will be a proper corridor right below this highway where the animals, wildlife animals will be able to easily cross. So take a note of it. Next is Ministry of Housing and Urban Affairs has launched Safai Apnao Bimari Bhagao. This is the campaign that has been launched under Swachh Bharat Mission Urban 2.0, and this Swachh Bharat Mission Urban 2.0 is basically to make the urban cities clean. Urban cities clean. Correct? Take a note of this. This month-long monsoon sanitation drive running from 1st of July to 31st of July, right? And it will be across all urban local bodies in India that will tackle health risks associated with the clogged drains, stagnant water, garbage hotspots, and so on. Next is Kerala's Aralam Wildlife Sanctuary became the India's first butterfly sanctuary, right? Aralam Wildlife Sanctuary. Where is it? It is located in Kerala, and it will be the India's first butterfly sanctuary. It is located in the Kannur district of Kerala. Right? The renaming here will strengthen the butterfly conservation and also position the sanctuary as a global biodiversity hotspot. So, Aralam Wildlife Sanctuary now became India's first butterfly sanctuary. This Aralam Butterfly Sanctuary now, it was established in 1984. It is 55 square kilometer of area. If we talk about Kerala, who is the Chief Minister of Kerala? Pinarayi Vijayan. And the capital of Kerala is Trivandrum. Periyar National Park is located here. Next, Amit Shah, our Home Minister, has addressed Golden Jubilee celebrations of DOL, that is your Department of Official Languages. Right? Take a note of this. And Rekha Gupta, the Chief Minister of Delhi, was present here. Right? And Amit Shah, he also highlighted Hindi Shabd Sindhu, right? I repeat, he also highlighted Hindi Shabd Sindhu. This is a dynamic repository of vocabulary developed to standardize and enrich the Hindi language, right? Apart from this, he also stated the department's 50-year journey that will contribute to the revival of the India's cultural self-respect by promoting the governance in the Indian language. So take a note of this, Amit Shah, right? He addressed the Golden Jubilee celebration of the Department of Official Languages. The Golden Jubilee means 50 years. Next is International Affairs, World Bank, IAEA. IAEA is your International Atomic Energy Agency, right? Here you can see Ajay Banga on the right side, right? They together signed an agreement to collaborate on nuclear energy for safe development. See, this nuclear energy, it is considered a clean fuel, right? It does not create any pollution on its generation, right? And Ajay Banga on the right and Rafael Marino Grossi on the left, who is the Director General of IAEA, they together signed this agreement. The focus here will be on building knowledge related to the nuclear energy field, extended the lifespan of existing nuclear power plants. As we will be seeing now, AI is coming and the models that are running, they require high amount of energy, or they require high energy. High consumption of energy will be there. So we will be requiring more energy sources, more of energy will be required. So for the same reasons, they are being built. If you remember, day before yesterday, we also discussed about the SMRs, that are your small modular reactors. They will be developed in a large proportion that will be catering to the rise in the energy demand. If we talk about IAEA, where is the headquarters? It is in Vienna, Austria. Next is the Netherlands hosted the NATO summit from 24th to 25th of June. Take a note of this, students, right? So NATO, that is North Atlantic Treaty Organization. This NATO summit was hosted by Netherlands. Take a note of this, students, important. And this was for the first time since the formation of NATO in 1949 that Netherlands hosted this summit. Also, NATO, they have adopted a new 5% GDP defense spending target at the Hot Summit, which was earlier 2%, right? Which has now increased to
5%. Also, the NATO countries are expected to achieve this new spending target over the next years, by that is 2035. One more thing, remember, Turkey to host the NATO summit in 2026 and Albania in 2027. Next is United Nations have launched UN80 initiative that will reform the global governance. It is to reform and modernize the organization as it approaches 80th anniversary, right? That is United Nations. Take a note of this. Correct. One more thing here, remember that this initiative will streamline the UN operations by reducing the administrative redundancies, right? Also, this will review more than 3,600 active mandates for more than 40,000 UN bodies using artificial intelligence and data analysis. Next, UNEP, United Nations Environment Program, has launched NDC Cooling Guidelines 2025. Before moving on, student, one more thing, remember, I forgot to mention UN was established in 1945, hence the 80 years in 2025. Next, United Nations Environment Program, right, have launched NDC Cooling Guideline. This will help the countries to integrate or adopt the cooling measures for both adaptation and mitigation pathways. These guidelines were launched during the 62nd session of the United Nations Framework on Convention on Climate Change. Also, this NDC framework, right, they will offer 6-stage step-by-step framework that will support with the help of the various countries, right? And the target here will be to assess the hydrofluorocarbons that are in the atmosphere. These are the main sources of the rise in climate change, right? They contribute to the climate change a lot. Correct. Then apart from this, the goal here is to reduce the emission from cooling, which is currently accounted for almost 7% of the global greenhouse gas emissions, and by nearly 60% by 2050. Correct. Take a note of this. So it is UNEP that has launched this NDC cooling guidelines, and NDC stands for Nationally Determined Contribution Cooling Guidelines. Next is banking and finance, students. PhonePe, HDFC Bank, they have launched the Coke branded RuPay credit card with UPI integration. Take a note of it. Here it is PhonePe, that is Bengaluru, Karnataka based, right? And HDFC Bank Limited, that is Mumbai, Maharashtra based. They have launched this PhonePe HDFC co-branded credit card on the RuPay network. And this new co-branded credit card will be available in 2 variants. First is Ultimo and second is Uno. Next is Economy and Business, ICRA, that is the Gurugram, Haryana based Investment Information and Credit Rating Agency. They have retained the GDP growth rate for FY26 at 6.2%. Take a note of this, right? And RBI, they are projecting a growth of 6.5%. Next, we are moving on to appointments and resignation. Zhou Ziai, right? She has been elected as the AIIB's first women president, as you can see here in the picture. This decision was taken during the 10th annual meeting of the Board of Governors, and she will assume her role. She will be in this position for the next 5 years, and her role will be starting from 16th of January 2026. She will succeed whom? She will be succeeding Jin Leekan, right? Next, one more thing. Zhou Zhai, she was nicknamed as the Tiger Fighter. Next is Science and Tech. ICG, that is Indian Coast Guard, inducted the first fast petrol vessel Adamya under the 08 FPV project at the Goa Shipyard Limited. That means this is one of the first of the 8 fast petrol vessels that will be delivered by Goa Shipyard Limited, and it is Indian Coast Guard that has inducted this first fast petrol vessel, right? That is Adamya. This will boost the India's maritime security and indigenization of the shipbuilding capabilities. These fast petrol vessels, these are high-speed, agile maritime platforms used by the Indian Coast Guard for coastal surveillance and patrolling. Next is Italy's Iron Cub 3. It became the world's first jet-powered flying humanoid robot. I repeat, the world's first jet-propelled humanoid robot, that is Iron Cube 3, developed by Genoa, Italy-based Italian Institute of Technology, has lifted off the ground about 50 centimeters and remained stable for the entire duration, and it is a breakthrough in the humanoid robots. So take a note of this. With the launch of AI, we will be seeing that the robots will be increasing, right? And we will be seeing in future that everything will become automated. Let's see how it plays out, but we should know about this. And this Iron Cube 3, this is a 70 kilogram humanoid robot.
Next is Safran has established the Rafale engine MRO facility in Hyderabad. What is MRO? It is maintenance, repair and overhaul facility. It will be for M88 engines that are powering the Dassault Rafale fighter jets that are operated by the Indian Air Force. So Paris, France-based aerospace major firm Safran Group, they have announced the establishment of the Safran Aircraft Engine Service Limited in Hyderabad, Telangana. Moving on to sports students, we are talking about our country India. We have won 3 gold medals at the second Asian Squash Doubles Championship. The location where the final event or the second edition of Squash Double Championship was held is Malaysia. Right, so India won 3 gold medals, right, of the men's double, women's double and mixed double. Here you can see in men's double, Abhay Singh and Velavan Senthil Kumar has won the gold medal. Then women's double here, Joshna Chinappa and Anahat Singh won the gold medal here. And in mixed double, Abhay Singh and Anahat Singh has won the gold medal here. Next is books and author students. Indian cricketer Shikhar Dhawan debuts as author and pens his memoir, that is The One Cricket, My Life and More. Here he is sharing about his professional life as a cricketer and as a champion player and his personal life. This book will be published by HarperCollins, India. Next, World MSMEs Day observed on 27th of June. This day is to raise awareness about the MSMEs, right? Why they are important? They generate a lot of employment. If we talk about India, a lot of employment is generated from the MSMEs. They contribute to the GDP as a lot of products and services by them are exported, and that is the reason that the Indian government is also promoting these MSMEs. Various initiatives are being launched to help them finance whenever their operational requirement is there. This year it was the 9th observance of this day, and there is a theme enhancing the role of MSMEs as drivers of sustainable growth and innovation. First time this day was observed in 2017. Then next is International Day of Deaf Blindness observed on 27th of June. This day is observed basically to raise awareness or to promote global awareness about deaf blindness. This is a disability that involves the combined loss of vision and hearing. Deaf means you are not able to hear, and blindness you are not able to see. So it combines it is basically the combination of both loss of vision and loss of hearing. This creates a unique challenge in communication, mobility and access to information. And there is a Deaf Blindness Awareness Week that is observed from 23rd to 29th of June. There is a theme also, students, cultivating leadership together we grow. This is the theme here. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. The Survey of India updated India's official coastline length to 11,098 km, mentioned the organization that led the multi-year scientific review in collaboration with the SOI, right? That is Survey of India. So mention the organization. It is National Hydrographic Organization. And this revision, earlier the coastline was estimated to be 7,516 km, which now has been added 5,337 km, and now the total has become 11,098 km. Right, and this revision follows a multi-year scientific review that was led by Dehradun, Uttarakhand based National Hydrographic Organization in coordination with the Survey of India. Next, the world's first dash named Babuji Vanam was inaugurated by Telangana Governor Jishnu Dev Verma at Kana Shanti Vanam in Hyderabad as a part of 125th birth anniversary celebration of Pujya Babuji Maharaj. So the world's first energy transmission garden by the name Babuji Vanam. Vanam means garden. Right, this was inaugurated by Telangana Governor Jishnu Dev Verma at Kana Shanti Vanam in Hyderabad. Next, identify the medical condition for which India conducted the first human gene therapy trial in April 25 through a collaboration between Biotechnology Research and Innovation Council's Institute for Cell Science and Regenerative Medicine in Bengaluru and Christian Medical College, Vellore. So, identify that medical condition for which India conducted its first human gene therapy trial. It is for hemophilia, right? This is a genetic blood disorder, right, in which blood does not clot normally, causing abnormal bleeding.
Next, identify the portal that was launched by Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu to simplify the application process for various social security pension schemes in the state. It is e-Kalyan, right? This portal reflects the Himachal Pradesh government's commitment to enhance the transparency and efficiency in delivering the social welfare schemes. Next, on 69th Foundation Day, that was on 1st of May, of the Directorate of Enforcement, the Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary has honoured several Enforcement Directorate officers for their outstanding service. Who among the following received the President's Medal for Meritorious Service during this event, right? This was the 69th Foundation Day of ED, right? And who among the following received the President's Medal here for Meritorious Service during the event? Abhishek Goyal. Take a note of it. And a total of 23 officers, right, and zonal units were honored here. Next, which ministry organized the event Aging with Dignity Initiatives for the Welfare of Senior Citizens that was attended by the President Draupadi Murmu ma'am on 2nd of May at Rashtrapati Bhavan Cultural Center, Delhi. So it is Ministry of Social Justice and Empowerment. This event was organized by Ministry of Social Justice and Empowerment, and here various key initiatives that are dedicated to the well-being of senior citizens were launched during the event. Next, name the digital platform that was launched by Moraji Desai National Institute of Yoga under the Ministry of Ayush during the Yoga Mahotsav event in May 25 to mark the 50-day countdown to International Day of Yoga 2025. It is Yoga Sangam portal. Take a note of this. And International Yoga Day was observed on 21st of June. Next, in May, Union Minister for Corporate Affairs Nirmala Sitharaman ma'am, our Finance Minister, inaugurated the Corporate Bhavan, a 7-story facility for the Ministry of Corporate Affairs, where in Kolkata, West Bengal. Next, in May, Union Minister Amit Shah, our Home Minister, paid tribute to by unveiling a statue and renaming a road and rotary in New Delhi on the 35th death anniversary of Bodofa Upendranath Brahmaji, right, in New Delhi. This ceremony was organized by the government of Assam, and it is here this statue that we are talking about. This is a 9-feet statue that was unveiled, and the road was named Lala Lajpat Rai in South Delhi was renamed to. So this road was renamed to what? Bodofa Upendra Brahma Marg. Correct? Take a note of it. Then next, one more thing, this statue of Bodofa, right? It is also known as the guardian of the Bodos. Guardian of the Bodos, right? Or we can say father of the Bodos. Next, name the advanced light helicopter model developed by Hindustan Aeronautics Limited that was cleared for operations in May by the Indian Army and Indian Air Force. It is advanced light helicopter Dhruv, correct? And it was this helicopter, it has been recently approved for the operations that will be done by Indian Army and Indian Air Force. So that these forces will be now using this advanced light helicopter Dhruv. And 340 helicopters have been manufactured so far for the usage. Next, identify the India's first genome edited rice varieties that were revealed by Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan in New Delhi. It is DDR Khan 100, that is Kamla, and Pusa DST Rice 1. So these are the two varieties. These are the genome edited varieties. That means they will be having better output. They will be resisting to the change in temperature. The quality will be better here. It will be more nutritious. Next, mention the organization in India that collaborated with the Belgium's Grey Space Law and Policy Consulting Firm to launch the Stride EUI initiative in May to enhance India-European strategic partnership. It is the Dialogue. Next, recently in May, which of the following state is set to become a key participant in India's first interstate cheetah conservation corridor, collaborating with Madhya Pradesh to establish a 17,000 square kilometer wild corridor? It is Rajasthan. Right, take a note of this. The aim of this project is to improve the genetic diversity and ensure better movement of wildlife, and also to mitigate the challenges that are there of the habitat fragmentation. This corridor will be linking Palpur, Kuno National Park and Gandhi Sagar Sanctuary that are in Madhya Pradesh. They will be connected with Mukundra Hills. Mukundra Hills Tiger Reserve that is in
Rajasthan. So in short term we can say Madhya Pradesh here will be connected with Rajasthan for these wildlife corridor. Next, who has been appointed as the chairperson of the Committee on Estimates for FY26 by Lok Sabha Speaker Om Birla in May 25. So, Sanjay Jaiswal was appointed here. This committee will comprise of 30 members, all from Lok Sabha. Next, as per the provisional data released by the Ministry of Mines in May, what was India's iron ore production in FY25? It was 289 million metric tons. Also, manganese ore. Its production also reached a new all-time high in FY25, rising by 11.8% to 3.8 million metric ton. Next, the Indian Army received a Igla-S missiles. This is a type of Russian-made, very short-range, man-portable air defense system that is used to shoot down the low-flying targets such as your drones, helicopters and missiles. If we talk about Israel students, they are having Iron Dome. And now USA is planning that they will be having Golden Dome. It is similar to that of Iron Dome. Next, name the institute under the Ministry of Earth Science that launched submarine cable project in May to enhance the long-term monitoring of the Indian Ocean. Which is the institute? It is Indian National Center for Ocean Information Services. They have launched this submarine cable project that will improve the long-term monitoring of the Indian Ocean, and a 150 kilometer long submarine cable will be installed off the coast of Vandur, that is in Andaman and Nicobar Islands. Next, mention the institute that received the approval from the Ministry of Education to open an off-campus center at GIFT City in GIFT IFSC in Gandhinagar, Gujarat. Which is that institute we are talking about? That is IIFT, Indian Institute of Foreign Trade. Next, Chief Minister of Chhattisgarh Vishnu Diyo Sai laid the foundation stone of Data Center Park. That is India's first AI-based infrastructure project in the Sector 22 of Nawa Raipur, Chhattisgarh. This data center park, this will be a 13.5 acres of area, and the first phase will commence the capacity with 5 megawatts with a plan to extend it to 150 megawatt, and additionally 2000 crore rupees will be spent here. Next, which state government hosted a 2-day strawberry festival in 2025 in May to promote agro-tourism and support the rural livelihoods and showcase the state growing strawberry cultivation? It is which state? Meghalaya. So remember, if we are talking about strawberry festival, it is related to Meghalaya. Next, Union Minister for Ministry of Civil Aviation Kinjarappu Ram Mohan Naidu recently granted in principle approval for setting up a greenfield airport. Where this will be set up? It will be set up in Kota and Puri. Where are they located? These are located in Odisha. Right? Where are they located? In Odisha. Puri is in Odisha and Kota is in Rajasthan. Kota, the very famous location where the institutes are famous, right? And here the airport will be developed in 2 phases worth 1507 crore rupees. Correct? That is the first airport in Kota. Next, in May, National Museum for Clean Ganga has approved a project to protect and manage the Nathmalpur Bagad wetland. This is a wetland. Where is this wetland located? It is located in Bihar, in the Bhojpur district of Bihar, and here it will be conserved. And this decision was taken during the 62nd executive committee meeting, and here this will be costing 3.51 crore rupees, and this project is the 5th wetland being undertaken under this mission, right? Next, under the cashless treatment of road accident victim schemes of 2025 as notified by the Ministry of Road Transport and Highways in May, what is the maximum amount entitled for cash treatment per accident per person? It is 1.5 lakh rupees per accident per treatment will be provided here, and the government has allocated 272 crore rupees for this particular scheme for FY26. Next, which state emerged as the India's leading textile exporter in FY25, contributing $7.99 billion? It is Tamil Nadu state, right? And Gujarat here ranked at the 2nd position, correct? And Maharashtra on 3rd position. Next,
mention the technology that is embedded in India's newly launched e-passport to enhance traveler security and identification. Which is it? It is radio frequency identification, that is RFID. The key benefit of this e-passport, that is it will enhance the ability to maintain the integrity of the passport holders data. Next, Union Minister Piyush Goyal has addressed Colombia India Energy Dialogue. It was held in New Delhi, that emphasizes the India's role in driving just and inclusive shift to clean energy. Next, Prime Minister of India Narendra Modi, right, and the Prime Minister of UK Keir Starmer has announced the successful conclusion of the comprehensive and mutually beneficial India-UK Free Trade Agreement. By what year this FTA Free Trade Agreement is expected to double the bilateral trade by volume between India and UK to $60 billion, which is currently $30 billion. So the targeted year is 2030. And this free trade agreement, this will ensure zero duty market access for the 99% of the Indian exporters to the UK. Next, students, let's move to the homework section. First question is, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of PhonePe and who he will be succeeding? Second question, recently Dettol, for their icy cool range, they have appointed whom as their brand ambassador? Third question, tell me recently who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer for Axis Life Insurance. Fourth question, who has been appointed as the Deputy Chief Executive Officer for SBI General Insurance. And fifth question, tell me who has been recently appointed as the Global Ambassador for Maldives. Right? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum efforts, maximum participation from all the students, because I'm saying lately that only few students are commenting in the homework section, but I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों 28 जून के आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इंडिया का पहला मैरीटाइम एनबीएफसी लॉन्च किया गया है, जो कि है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन 10 साल हो गए हैं अमृत स्कीम के, उसको डिस्कस करेंगे। एनएचएआई के द्वारा इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलप किया गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इन राजस्थान, रणथंभौर नेशनल पार्क के वहाँ। देन हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा SABB कैंपेन को लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर। देन केरला की अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रीनेमिंग कर दी गई है एंड उसको पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बना दिया गया। इससे बटरफ्लाई कंजर्वेशन के ऊपर काम बढ़ता हुआ दिखेगा। इन सभी चीज़ों को एंड मेनी मोर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल रहती हैं ये वीडियोस, तो इनको जरूर देखा करो एंड नोट जरूर बनाया करो। मैक्सिमम मुझे लाइक्स चाहिए आज की वीडियो में, एंड जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लो एंड देन स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सरबंदना सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मैरीटाइम एनबीएफसी, जो कि है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारे मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करने का ये काम करेंगे, राइट। एंड ये जो एनबीएफसी है ये बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा उन एमएसएमईज को, उन स्टार्टअप्स को जो मैरीटाइम सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट। इससे हम देखेंगे जो ये सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये क्या है, ये एक मिनी रत्ना है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE है, जिसको अभी NBFC बनाया गया अंडर RBI, राइट। एंड ये पहला NBFC है इन द मैरीटाइम सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स,
फिर कुछ स्कीम्स भी यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे इनिशिएटिव्स, जैसे डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनके द्वारा मैरीटाइम सेक्टर में, राइट। ये क्या है, डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फिर इसके बाद देखें सागर सेतु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, ताकि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके एंड ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया जा सके इन द मैरीटाइम सेक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अमृत इनिशिएटिव के, राइट। 25 जून 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनिशिएटिव अमृत को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। ये इनिशिएटिव क्या है बेसिकली कि जो सिटीज हैं या फिर हम बोले अर्बन सिटीज हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनको बेटर करने के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड कराने के लिए, बेटर सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जा सके, जैसे क्लीन वाटर, सेप्टिक मैनेजमेंट, सीवरेज मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई अच्छा हो, ड्रेनेज अच्छा हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, ग्रीन पार्क्स हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, राइट। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अमृत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। यहीं पे देखें तो 500 सिलेक्टेड सिटीज के ऊपर यहाँ पे काम किया गया है एंड 14,828 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया गया, वर्थ 2,73,000 करोड़ रुपीज, जो कि अमृत स्कीम के अंडर सैंक्शन किए जा चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप अमृत देख सकते हैं। एक और चीज अगर मिनिस्ट्री पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं फिर NHA, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे रहेगा इन राजस्थान, जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, उसके बफर जोन रहेगा। ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, ये हाईवे है, राइट, दोनों तरफ आपका फॉरेस्ट है या फिर ये नेशनल पार्क है, आपका रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ से इसके हाईवे के नीचे नीचे ये एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके थ्रू एनिमल्स यहाँ से इस एरिया को कवर कर सकेंगे, क्योंकि ये तो हाईवे हो गया। तो इसके नीचे एक अलग से एरिया बनाया जाएगा जहाँ से एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें, राइट। तो ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे है इन राजस्थान। फिर आ जाते हैं SABB कैंपेन। ये क्या है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर। देखो ये क्या है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके अंडर था कि हम सिटीज को क्लीन करेंगे, राइट, सिटीज की सफाई की जाएगी। इवन अभी हम देख रहे हैं मॉनसून आ गया है, तो यहाँ पर वाटर जो है कंजस्टेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वाटर क्लॉगिंग हमें देखने को मिलती है। जो आपके सीवरेज है वो प्रॉपर, ड्रेनेज है वो प्रॉपर साफ नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे साफ किया जाएगा ताकि प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर हो सके मॉनसून के टाइम पे, एंड कहीं वाटर स्टैग्नेंट ना हो सके, क्योंकि अगर वाटर स्टैग्नेंट होगा तो वो अलग तरीके की बीमारियाँ आती हैं उसके साथ, ठीक है। सो कमिंग बैक, एंड SPVs बनाए जाएंगे, स्पेशल पर्पस वेसल्स बनाए जाएंगे 100 सिटीज में, राइट, जो क्लीन पब्लिक एरियाज को या फिर पब्लिक एरियाज को क्लीन करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर केरला की अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है इंडिया की, जहाँ पे स्पेसिफिक फोकस दिया जाएगा कि हम बटरफ्लाई को कंजर्व कर सके, बटरफ्लाई के ऊपर या फिर बटरफ्लाई स्पीशीज को कंजर्व करने का काम किया जाएगा। यार यहाँ पे रीनेमिंग हुई है, ये याद रखेंगे। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब पहली बर्ड लाइफ सेंचुरी बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। ये है कहाँ पर, केरला में, केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आ जाते हैं अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा एड्रेस किया गया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मतलब 50 ईयर्स सेलिब्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखो आजकल आप देख रहे होंगे AI आ गया है, तो AI की बदौलत हम देख पा रहे हैं कि कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि जो हियरिंग होगी आपकी कोर्ट्स में, जो आपके पार्लियामेंट्स में जो मीटिंग्स होंगी, राइट, वो मल्टीलिंगुअल हो सके। मल्टीलिंगुअल होगा तो क्या होगा कि अलग अलग रीजन से जो लोग आते हैं, स्टेट से लोग आते हैं जिनकी बोली अलग है, वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे पार्ट ले सकेंगे, एंड जो डिसीजन मेकिंग हो सकेगी वो और बेटर हो सकेगी, राइट। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सारे, जैसे भाषण ही आ गया था, राइट, तो वो काफ़ी हेल्प कर रहा है मल्टीलिंगुअल इंडिया को बनाने में। तो कमिंग बैक, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को यहाँ पे एड्रेस किया। 50 साल हो गए थे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस के। यहाँ पे रेखा गुप्ता जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उनका भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसी के अलावा अमित शाह जी के द्वारा हिंदी शब्द सिंधु, ये एक रेपोजिटरी लॉन्च की गई है, जहाँ पे बेसिकली वोकैबुलरी रहेगी आपकी हिंदी लैंग्वेजेस की। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल अफेयर्स पर आते हैं स्टूडेंट्स। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। एंड राइट में देख सकते हैं अजय बंगा को, ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। एंड IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनके डायरेक्टर जनरल राफेल मारिनो ग्रोसी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक अग्रीमेंट देख सकते हैं आप, साइन हुआ है, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। राइट, आप देखेंगे अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था कि SMRs को बनाने का काम किया जा रहा है बड़ी मात्रा में। SMR क्या होता है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। राइट, इससे क्या होगा? लो कॉस्ट होगी लेकिन हमारी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। अभी हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इनके सर्वर्स को रन करने के लिए जो मॉड्यूल्स रन हो रहे हैं, जैसे OpenAI हो गया, DeepSeek हो गया, राइट, जेमिनी हो गया, तो इनको रन करने के लिए ना बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। एंड उस एनर्जी की डिमांड को पूरी करने के लिए ही हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वो अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना रहे हैं ताकि जो ये डिमांड है इसको पूरा कर सके। एंड अगर मैं बात करूं IAEA का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? ये है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं, नीदरलैंड होस्ट करेगा नेटो समिट को 24 से 25 जून तक। एंड ये फर्स्ट टाइम होगा कि नीदरलैंड के द्वारा, जब से नेटो बना है, नेटो की समिट पहली बार यहाँ पे नेटो होस्ट कर रहा है। टेक अ नोट ऑफ दिस, 1949 में नेटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक और चीज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिली कि नेटो कंट्रीज ने बोला है कि जो पहले ये 2% अपना डिफेंस बजट पे स्पेंड करते थे, 2 या 3% करते थे, वो बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया। ये सबसे अच्छी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो याद रखनी है कि बढ़कर अब कितना हो गया? 5% का डेवलपमेंट या फिर 5% का डिफेंस स्पेंडिंग में अपने बजट में से अलोकेट करेंगे डिफेंस के ऊपर। राइट, ये हॉग समिट के द्वारा डिसीजन लिया गया। Take a note of this. Also, all member countries of NATO, they are expected to achieve this new target spending over the next years 2035 तक। नेक्स्ट, नेटो की अगर मैं बात करूं, नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसल्स में है, ब्रुसल्स, बेल्जियम। एंड मार्क रूट, ये यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। एक और चीज, टर्की होस्ट करेगा नेटो समिट 2026 को एंड अल्बेनिया 2027 में होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर UNAT इनिशिएटिव। देखो ये क्या है? 1945 में UN इस्टेब्लिश हुआ था, तो अब 2025 में इसके 80 साल पूरे हो गए हैं, तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए UNAT इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अभी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया कि जो 80वीं एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे इस बार, उसके बारे में अवेयरनेस, यहाँ पे कितने हमारी एफिशिएंसी रही, क्या कॉस्ट कटिंग की गई या फिर कहाँ पे स्पेंडिंग की गई, क्या क्या इनिशिएटिव्स UN के द्वारा लॉन्च किए गए, कहाँ पे कितने आपकी UN बॉडीज से रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उन सबको AI की मदद से एंड डाटा एनालिटिक्स की मदद से उनको स्टडी किया जाएगा। राइट, उनके डिसीजंस के ऊपर काम किया जाएगा कि क्या एफिशिएंसी आ सकती है, क्या और कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, कहाँ पे हमें और काम करना चाहिए, उन सब के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने NDC कूलिंग गाइडलाइंस को लॉन्च किया 2025 की। NDC क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कूलिंग गाइडलाइंस 2025 की, जो कि हेल्प करेगी कंट्रीज को कि वो इंटीग्रेट कर सके कूलिंग मेजर्स को इन बोथ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पाथवेज। 62nd एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके दौरान यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। ये एक स्टेप बाय स्टेप आपका 6 स्टेज का स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है, जो कि हेल्प करेगा कंट्रीज को कि वो कैसे पॉलिसी मेकिंग कर सकें। राइट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, जिससे आपका क्लाइमेट चेंज काफ़ी बढ़ता हुआ दिखता है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या हम अलग एनर्जी रिलेटेड एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट में कूलिंग हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इन्वायरमेंट में जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, वन ऑफ द बिग ग्रीन हाउस गैस या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर से भी रिलीज होती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये हीट को ट्रैप करती हैं। राइट, इन एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जब इन पे सूर्य की किरण पड़ेगी तो ये एनर्जी को उसमें ट्रैप कर लेंगे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट कूल हो जाता है। तो इनको एलिमिनेट करना हमारे इन्वायरमेंट से बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एक कूलिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड तभी हम अपने जो पॉल्यूशन के मेजर्स हैं, जो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की जो गाइडलाइंस है, उसको अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। फोन पे जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है एंड HDFC बैंक मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है, इन्होंने लॉन्च किया को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड विद UPI इंटीग्रेशन। राइट, फोन पे HDFC को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क पे इसको लॉन्च किया गया एंड 2 वेरिएंट्स में इसको लॉन्च किया गया है। एक है अल्टीमो एंड दूसरा है यूनो या ऊनो। फिर आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। ICRA जो कि इंडिया की
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन्होंने इंडिया की जीडीपी फॉर FY26 प्रोजेक्ट करी एट 6.2%। वहीं पे अगर हम देखें आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है 6.5% की ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। अभी जो जाई, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये इलेक्ट की गई हैं AIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। इनकी यहाँ पर पहली वीमेन प्रेसिडेंट ये अपॉइंट की गई हैं। 16 जनवरी 2026 से इनका टर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। 5 साल की पोजीशन पे ये रहेंगी। ये किनको सक्सीड करेंगी? जिन लीक्वन को ये सक्सीड करेंगी। एंड इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है, वो है टाइगर फाइटर। टाइगर फाइटर के नाम से जाना जाता है, राइट। एंड इनका जो रूल है हाई प्रोफाइल एंड एंटी करप्शन एफर्ट्स में, उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक पर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया पहला फास्ट पेट्रोल वेसल अदाम्या, राइट। ये वन ऑफ द 8 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट्स जो हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो डिलीवर करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड को, उसमें से पहला है ये फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्या। ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स बेसिकली आपका याद रखेंगे काफ़ी फास्ट होती हैं, राइट। एंड ये आपकी हमारी सर्वेलेंस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगी। हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता हुआ हमें दिखेगा, करेक्ट। एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इनको डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं फिर इटली के आईरॉन कब 3। ये बेसिकली वर्ल्ड का पहला जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये 70 किलोग्राम का ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें आपका एक जेट प्रोपल्शन लगा हुआ है। एंड इसको भी टेस्ट किया गया था एंड ये 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड ये स्टेबल रहा, जो कि एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट माना जा रहा है, राइट। इवन हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इसके आने से आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड ड्रोन्स हो गए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गई, राइट, ह्यूमनॉइड्स हो गए, रोबोट्स हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखेंगे। एंड ये स्टार्ट भी हो गया है। इवन टेस्ला के द्वारा उनको अपना खुद का रोबोट लॉन्च किया गया था। इवन फ्यूचर में हम देखेंगे वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट साफरान, इन्होंने स्टैब्लिश किया रफेल इंजन की MRO फैसिलिटी को हैदराबाद में। MRO क्या है? मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी। M88 इंजन ऑफ द डसॉल्ट रफेल फाइटर जेट को इनकी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए ये फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है हैदराबाद में, जो कि सैफरान पेरिस फ्रांस बेस्ड कंपनी रहेगी, सैफरान ग्रुप। इन्होंने स्टैब्लिश किया है सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना में। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। हमारी कंट्री इंडिया ने अभी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। किस में जीते? सेकेंड एडिशन ऑफ एशियन स्क्वॉश डबल्स चैंपियनशिप में, राइट। हुई कहां पे थी? लोकेशन पूछा जाए तो मलेशिया में ये हमें देखने को मिला था, राइट। 3 गोल्ड मेडल जीते इंडिया के द्वारा सेकेंड एशियन स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप के दौरान। किन किन ने जीते? अभय सिंह एंड वेलावन सेंथिल कुमार, इन्होंने मेंस डबल में जीता। देन वीमेंस डबल में जोशना चिनप्पा एंड अनाथ सिंह के द्वारा जीता गया, राइट। एंड मिक्स डबल्स में अभय सिंह एंड अनाथ सिंह के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट पे आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे स्टूडेंट्स। इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन, इन्होंने डेब्यू किया है एज एन ऑथर एंड अपना मेमोयर लिखा, जो कि है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ एज ए क्रिकेटर के बारे में बताया, एज अ चैंपियन प्लेयर, एंड अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे बताया कि कैसे उन्होंने ये क्रिकेट में क्या जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस रहे। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड MSME डे 27 जून को ऑब्जर्व किया जाता है MSMEs के बारे में इंपॉर्टेंस क्रिएट कराने के लिए एंड MSMEs को ग्रो करने में मदद करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। MSMEs किसी भी एरिया में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साधन होती है एंड इसीलिए इंडिया की सरकार भी आप देखते हैं कि बड़े स्केल पर MSMEs को प्रमोट करती है, उनको हेल्प करती है कि वो ग्रो कर सकें, क्योंकि इंडिया के MSMEs से अगर हम देखें काफ़ी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को ये बना के एक्सपोर्ट करते हैं टू द इंटरनेशनल मार्केट, जो कि हमारे जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इस बार हमने 9th एडिशन इस डे का ऑब्जर्व किया 27 जून को एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, एनहेंसिंग द रोल ऑफ MSMEs एज अ ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। 2017 को ये डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, 27 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डेफ ब्लाइंडनेस क्या होता है? बेसिकली ये वो डिजीज होती है जिसमें आपका आदमी सुन भी नहीं पाता और देख भी नहीं पाता। ये बहुत ज़्यादा एक
एक डिजीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर मान लो आप देख नहीं सकते तो आप सुनकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सुनाई दे जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आप मान लो सुन नहीं सकते तो आप देख के पढ़ सकते हैं या फिर हैंड जेस्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर दोनों चीज़ें हो जाएं, आप सुन भी नहीं पा रहे और देख भी नहीं पा रहे, तो कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलती है, राइट। तो 27 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड इसका एक वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है, डेफ ब्लाइंड अवेयरनेस वीक, जो कि 23 से लेके 29 जून तक ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम रहेगी कल्टिवेटिंग लीडरशिप टुगेदर वी ग्रो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, देन हम मूव करेंगे होमवर्क सेक्शन पे जो आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट करना है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं। किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा इवेंट एजिंग विद डिग्निटी इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, जिसको अटेंड किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ऑन 2 मई एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन दिल्ली। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट, योगा महोत्सव के दौरान, जो कि आपका 50th डे काउंटडाउन था ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 21 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया है योगा संगम पोर्टल। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण मैम, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कॉर्पोरेट भवन को लॉन्च किया, जो कि एक 7 स्टोरी की फैसिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। कहां पर? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इस कॉर्पोरेट भवन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने पे किया ट्रिब्यूट बाय अनवेलिंग अ स्टैचू एंड रीनेमिंग अ रोड एंड रोटरी इन न्यू दिल्ली ऑन 35th डेथ एनिवर्सरी ऑफ बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, राइट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक पहले रोड का नाम था लाला लाजपत राय, राइट, उस रोड का नेम चेंज करके बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग कर दिया गया है, जो कि एक 835 मीटर का रोड है, 50 फीट वाइड रोड रहेगा, राइट। एंड ये जो स्टैचू है 9 फीट का स्टैचू रहेगा। एंड ये स्टैचू आपका सिंबल है सेल्फ रिस्पेक्ट का, राइट। 9 फीट का स्टैचू है, जिसको हम बोले तो फादर ऑफ या फिर गार्डियन ऑफ बोडो ट्राइब, ठीक है। बोडो एक ट्राइब है जो कि असम में मिलती है। नेक्स्ट, नेम द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मॉडल, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि क्लियर हो गया फॉर ऑपरेशंस एंड अब इसको इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स यूज कर सकती हैं फॉर देयर ऑपरेशंस। क्या नाम है उसका हेलीकॉप्टर का? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। एंड 340 ये ऐसे हेलीकॉप्टर्स अभी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं सो फार, जो कि यूज किए जा सकते हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जो कि शिवराज सिंह चौहान है, इनके द्वारा लॉन्च की गई। DRR धन 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1, ये 2 वो वेराइटीज हैं जो लॉन्च की जाएंगी, की जा चुकी है। ये जो वेराइटीज होंगी ये फिर आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगी, बेटर क्वालिटी यहाँ पे रहेगी प्रोड्यूस की राइस की, बेटर क्वांटिटी रहेगी एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिन्होंने कोलैबोरेट किया बेल्जियम की ग्रे स्पेस लॉ एंड पॉलिसी कंसल्टिंग फर्म के साथ टू लॉन्च स्ट्राइड EUI इनिशिएटिव इन मे टू एनहेंस इंडिया यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम बताओ? वो है द डायलॉग। Next, recently, which of the following state is set to become a key participant in India's first interstate cheetah conservation corridor, जहाँ पे मध्य प्रदेश इस्टेब्लिश करेगा 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो वो है राजस्थान। तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बीच में ये कॉरिडोर बनेगा, जहाँ पे हम देखेंगे राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, राइट। तो राजस्थान की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे रहेगी? तो राजस्थान की है आपकी कूनो नेशनल पार्क एंड मुकुंद्रा हिल्स, कूनो नेशनल पार्क, राइट। एंड मध्य प्रदेश में ये रहेगी आपकी मुकुंद्रा हिल्स। आई करेक्ट माई सेल्फ, उल्टा बोल गया मैं, मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क, राइट, एंड राजस्थान में है आपका मुकुंद्रा हिल्स, राइट। एंड इनके बीच में यहाँ पे ये कॉरिडोर रहेगा, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। Next, who has been appointed as the chairperson of the Committee on Estimates for FY26 by Lok Sabha Speaker Om Birla ji in May 2025? तो संजय जायसवाल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट। नेक्स्ट, एज पर द provisional data released by Ministry of Mines in May, what was India's iron ore production in million metric tons in FY25?
5। तो 289 मिलियन मैट्रिक टन का यहाँ पे आयरन ओर का प्रोडक्शन था। मैग्नीज ओर की अगर हम बात करें तो 3.8 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हमें देखने को मिला, जिसमें 11.8% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें इंडियन आर्मी ने रिसीव किया इग्ला एस मिसाइल्स को, जो कि एक टाइप ऑफ रशियन मेड वेरी शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा। इससे आपके ड्रोन्स, यूएवीज, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, इनको ख़त्म करने का काम किया जाएगा, राइट। जैसे अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास अपना सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है आयरन डोम। सिमिलरली अब यूएसए ने बात की कि हम गोल्डन डोम लॉन्च करेंगे, राइट, एंड बोला गया 2029 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिन्होंने लॉन्च किया सबमरीन केबल प्रोजेक्ट को मई 2025 में टू एनहेंस लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एंड यहाँ पर 150 किलोमीटर लंबी आपकी सबमरीन केबल्स को इंस्टॉल किया जाएगा वांदूर में एट द कॉस्ट ऑफ वांदूर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूट जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताकि एक ओपन खोला जा सके एक ऑफ कैंपस सेंटर एट जिफ्ट आईएफएससी गांधीनगर गुजरात में। तो किनको अप्रूवल मिल गया है? वो है आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को, एंड यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णु दियो साय, इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर स्मार्ट डाटा सेंटर पार्क। ये इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेगा सेक्टर 22 में इन नवा रायपुर इन छत्तीसगढ़, राइट। तो ये डाटा सेंटर पार्क रहेगा, एआई बेस्ड रहेगा। एआई यहाँ से डाटा खींचेगा, डाटा प्रोसेस करने के लिए लेगा। ये डाटा सेंटर पार्क 13.5 एकर्स में बना है। पहले ये 5 मेगावाट कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा, फिर बढ़कर ये फिर फर्दर फेजेस में 150 मेगावाट पे आ जाएगा। एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ की यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने होस्ट किया 2 दिन का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल 2025 में टू प्रमोट एग्रो टूरिज्म एंड सपोर्ट द रूरल लाइवलीहुड्स एंड शोकेस द स्टेट ग्रोइंग स्ट्रॉबेरी एंड कल्टीवेशन। तो सिंपल टर्म में याद रखेंगे, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मेघालय में हुआ। इससे क्या होगा? एक तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज की आपकी जो सेल बढ़ेगी, दूसरा टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। बाकी स्टेट से लोग यहाँ पर आएंगे, बाकी कंट्रीज से लोग आएंगे इस फेस्टिवल को विटनेस करने के लिए। नेक्स्ट, इन में यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किंजरप्पू राम मोहन नायडू जी, इनको ग्रांट किया गया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कहाँ पर? तो ये कोटा एंड पुरी में स्टैब्लिश किया जाएगा। कोटा है राजस्थान में एंड पुरी है ओडिशा में। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने अप्रूव किया एक प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज डैश वेटलैंड। तो नाथमलपुर भगड़, इस वेटलैंड को कंजर्व करने की बात की गई ड्यूरिंग द 67 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। एंड ये आपका वेटलैंड है कहाँ पर? ये ओडिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आ जाते हैं, अभी कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम, ये भी लॉन्च की गई थी कुछ टाइम पहले, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके द्वारा बताया गया कि इसमें जो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा पर एक्सीडेंट पर विक्टिम, वो कितने अमाउंट तक का होगा? 1.5 लाख रुपए तक का होगा। एंड इसी के लिए सरकार ने 272 करोड़ रुपीज़ भी एलोकेट किए हैं फॉर FY26। फिर आ जाते हैं, किस स्टेट को इमर्ज किया गया एज द इंडियाज लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन FY25 कॉन्ट्रीब्यूटिंग $7.99 बिलियन। तो वो है तमिलनाडु। तो फर्स्ट पोजीशन पे तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है गुजरात, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाता है, मेंशन द टेक्नोलॉजी दैट इज एम्बेडेड इन इंडियाज न्यूली लॉन्च्ड ई पासपोर्ट टू एनहेंस ट्रैवलर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। तो कौन सी है वो टेक्नोलॉजी? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी, राइट। इससे जो पासपोर्ट है वो आपकी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एंड जो पासपोर्ट का डाटा है वो यहाँ पे इस ई पासपोर्ट में सेव हो सकेगा। नेक्स्ट, इनमें यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, इन्होंने एड्रेस किया कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग को इन दिल्ली, जिसका एम्फेसिस रहेगा इंडियाज रोल इन ड्राइविंग अ जस्ट एंड इंक्लूसिव शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड PM ऑफ UK कीर स्टारमर, इन्होंने अनाउंस की सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसके अंदर बोला गया कि 2030 तक टारगेट है कि जो हमारा अभी ट्रेड है इंडिया और UK के बीच में $60 बिलियन डबल हो जाएगा टू $60 बिलियन। नेक्स्ट,
एम नागराजू जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, इन्होंने लिस्ट किया इंडिया का पहला मॉर्टगेज बैक्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को थ्रू स्ट्रक्चर्ड आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस इनिशिएटिव से क्या होगा, लिक्विडिटी हमें बढ़ती हुई दिखेगी हाउसिंग मार्केट में एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड ये अट्रैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया एक नई स्कीम कॉल्ड पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द स्टेट। अंडर द स्कीम जो एलिजिबल आर्टिस्ट हैं ये रिसीव करेंगे मंथली ऑनरेरियम ऑफ हाउ मच अमाउंट, ये 60 साल से ऊपर के होने चाहिए पहली बात ये आर्टिस्ट, एंड इनको 10,000 रुपये हर महीना मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द सपोर्ट कि वो अपनी डे टू डे फाइनेंशियल को मैनेज कर सके। नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया लॉन्च ऑफ द आदिशक्ति अभियान जो कि एक स्टेट वाइड कैंपेन है जिसका फोकस रहेगा ऑन वीमेन एम्पावरमेंट। इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए भी यहाँ पे अलोकेट किए गए। 300 बर्थ एनिवर्सरी थी ये अहिल्याबाई होलकर की जो कि फेमस 18th सेंचुरी क्वीन थी ऑफ होलकर डायनेस्टी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फोनपे and who he will be succeeding. Second question, recently Dettol for their icy cool range they have appointed whom as their brand ambassador. Third question, tell me recently who has been appointed as the managing director and chief executive officer for Axis Life Insurance. Fourth question, who has been appointed as the deputy Chief Executive Officer for SBI General Insurance. And fifth question, tell me who has been recently appointed as the Global Ambassador for Maldives. Right? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum efforts, maximum participation from all the students because I'm saying lately that only few students are commenting in the homework section, but I need to see maximum participation from all the students watching this video.